Good morning, students. Very good morning to all of you. Today we are going to start with a new chapter, that is bank reconciliation statement. As per schedule, it is on Wednesday, but today we are going to, on Friday. But today we are going to start with basics of BRS. So students will get some time for calculations for next 2 days. Okay. And last में theory तो हम लोग cover करते ही है. So let's start today's session. Before starting any session, yes, first we'll tell you basic rules of accounts. That is, due relationship starts with personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor कब होता है? When there is a sales, and when there is expenditure, there will be a creditor. Okay, so debtor becomes giver and creditor becomes receiver. So rules are very simple. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. After that modern approach, asset shows debit balance, liability credit, expenses debit, income credit, and capital account credit balance. Today we are going to start with the revision first. Revisions हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, that 12 15 एंट्रीज जल्दी जल्दी हम लोग रिकॉल करेंगे. ऑल एंट्रीज एक साथ 10 मिनट में ऑल एंट्रीज यू हैव टू रिकॉल. चलो एंट्री के बाद लेजर अकाउंट्स. रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएस स्टूडेंट्स लाइफ. ओके, टुडेज रिजल्ट परसेंटेज रियली टेरिफिक. आई वॉच कि रिजल्ट परसेंटेज जब आए तो बोथ ग्रुप्स पास होने वाले, ओनली 8% एट इंटर लेवल. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज. और 11% था फॉर ग्रुप 1 एंड 31% फॉर ग्रुप 2 था. ग्रुप 2 इजी आया था, ग्रुप 2 पर ग्रुप 1 यस डिफिकल्टी था इंटर में. तो मैं चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट्स बेटा अच्छे से इसको कंप्लीट करें. जितने भी मैं आपको ये बताते रहता हूं वो कंप्लीट कीजिए. एक ही मिनट. ओके, सो बेटा टुडे बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, यस बेटा बीआरएस से हम लोग शुरुआत करने वाले, पर उसके पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व जर्नल एंट्रीज. रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज सर फटाफट याद करो जर्नल एंट्रीज को. जर्नल एंट्रीज को याद कर लेते हैं स्टार्टिंग से. 10-20 जर्नल एंट्रीज. हाउ मच टाइम इट टेक्स सर? हाउ मच टाइम इट टेक्स? हार्डली. यस, आज तो टिकटिकी जी के साथ करेंगे रिविजन्स विद टिकटिकी जी. टिकटिकी जी किधर? 6. टिकटिकी जी को बुला लेते हैं. बहुत दिनों से स्टॉप वॉच लगाया नहीं है आपके लिए. ऐसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख. 1 लाख का कैश है बेटा. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लॉजिक. फटाफट रिवीजन करेंगे. लोन टेकन ऑफ रुपीज 1 लाख एट द रेट ऑफ 8%. 8% मतलब 8,000 रुपए इंटरेस्ट रहने वाला है. दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट. सो 1 लाख रुपीज लोन टेकन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, लोन इज अवर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है. सो लोन इज अवर, वी हैव टू पे इट, क्रेडिटर है. परचेस फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट. सो टू कैश. गुड्स परचेस कैश रुपीज 20,000 एंड संगम रुपीज 15,000. 15,000 संगम से गुड्स लिए हुए तो ही इज अवर डेटर. सेल्स है तो डेटर है. So sorry, purchase है तो is our creditor. Sorry, it's my mistake. So purchases account debit, gross amount से दिखेगा cash plus credit. 20,000 plus 15,000, that is 35,000. Then to cash goes out 20,000 and to संगम 15,000. संगम है 15,000. लाइट चली गई है 2 मिनट के लिए. यस, फिर भी नेट चालू रहेगा. थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाएगा पर यस थोड़ी देर के लिए. तो वी विल ट्राई कि लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है. सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर 15 से 20 मिनट लग जाएंगे. तब तक थोड़ा सा ब्लैकिश रहेगा. वेजेस पेड, स्क्रीन थोड़ी है कर नेट स्क्रीन. Wages paid rupees 2,000. Wages account debit to cash account. Wages to cash. Salary paid to Anand 8,000 and total salary is 10,000. We are follower of the accrual concept of accounting, sir. So salary चा debit ला 10,000 to cash आएगा 8,000 and to salary payable 2,000. Very simple, sir. Stationery purchase of rupees 2,000. Stationery खर्चा है तो expense debit होगा, cash goes out होगा, stationery account debit to cash. So 1 minute 48 second में हो चुका है. Advertisement expenses, it's again expenditure. Advertisement account expense account debit to cash. Goods sold
क्रेडिट प्लस कैश, कैश में है 18,000, अजिंक्य 25, 15, 58,000 टोटल होगा. सो कॅश अकाउंट डेबिट कम्स इन 18,000, अजिंक्यच्या डेबिटला 25,000 and मनीषच्या डेबिटला 15,000. टू सेल्स अकाउंट विल बी टोटल, यस ग्रॉस अमाउंट होगा 25 प्लस 15 40 प्लस 18, यस 58. देन बेटा पेड टू संगम, संगम को कितना पे करना था 15,000, बट वी पेड संगम को 14,500. क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर, संगम हमारा उधारी वाला क्रेडिटर था. सो संगम बिकम्स रिसीवर, संगम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,500 एंड संगम हैज टेकन डिस्काउंट ऑफ ₹500. तो डिस्काउंट छे तो क्रेडिट छे, रिसीव्ड है अपने लिए. सो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, संगम अकाउंट डेबिट 500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500. वेरी गुड सर, संगम का बैलेंस 0 हो चुका है. देन रिसीव्ड अजिंक्य से 22,000, अजिंक्य को माल बेचा था 25,000 का, बट वी सोल्ड गुड्स के बाद कैश कम्स इन 22,000. सो कैश अकाउंट डेबिट 22,000 टू अजिंक्य अकाउंट 22,000. वेरी सिंपल सर, कैश कम्स इन एंड अजिंक्य बिकम्स गिवर, से डेटर बिकम्स गिवर. अजिंक्य के पास अभी भी 3,000 रुपया बाकी है. इन्वेस्टमेंट इन एफडी, सर एफडी है, आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी डेबिट दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट को भी डेबिट दे सकते हो, बोथ आर करेक्ट. सो इन्वेस्टमेंट लिखो ऑब्लिक फिक्स डिपॉजिट टू कैश 50,000, 50,000 फॉर 12% 6 मंथ. तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 3,000 रुपया. हिडन अमाउंट इंटरेस्ट बाद में देखेंगे. इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 8,000 रुपीज. दिस एंट्री इज रिलेटेड टू विच एंट्री सर, दिस एंट्री इज रिलेटेड टू लोन टेकन वाली एंट्री, जो हमारा था 1 लाख के ऊपर का 8%, तो 8,000 रुपया था. और आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपने इंटरेस्ट भी पे किया ओनली 6,000 सर, 2,000 रुपया अभी भी बाकी है. 2,000 रुपीज स्टिल पेबल. सो इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंडिचर by 8,000 rupees to cash, 6,000 to interest payable is our liability, that is 2,000. सर समझ में आया. बैड डेट्स ओके, ऊपर का अमाउंट बैड डेट्स उधर क्लोज करना था 22,000 ओनली. सो आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड बैड डेट्स, सॉरी. कैश अकाउंट डेबिट 22,000 इधर एंट्री था, हियर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 22,000, अजिंक्य अकाउंट इज अ गिवर 25,000 and bad debts was our loss, bad debts account debit 3,000. वेरी सिंपल सर. और यहाँ पे आगे की एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर्ड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000 रुपीज. वेरी गुड सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. एवरी एंट्री इज क्लियर सर, लॉजिकली इज करेक्ट. यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लाइट आ चुकी है. यस, दिमाग की बत्ती जलाओ जल्दी जल्दी. चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड एफडी रुपीज 1,800. कितना था इंटरेस्ट 3,000 and I received only 1,800 till now. So sir, cash 1,800 comes in, received, and interest receivable is 1,200. Interest receivable है 1,200 and my income will be 3,000. Sir, entry clear. Cash account debit 1,800, interest receivable account debit 1,200 to interest account. Yes, 3,000. Always accrual concept of accounting. Depreciation चा डेबिट ला 10% का फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर परचेस कब किया था? फर्नीचर परचेस 20,000 कौन से एंट्री में किया था सर? फर्नीचर परचेस थर्ड एंट्री. सो एंट्री नंबर थर्ड से ये रिलेटेड है. डेप्रिसिएशन अपना लॉस है तो बेटा डेबिट है. डेप्रिसिएशन इधर एंट्री क्या होगा? ये आई थिंक मेरा रह गया था. डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैसे याद रखना है. एंड सेकंड अकाउंट इज फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट. सर याद आया. डेबिट ऑल लॉसेस के बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. कितलो अमाउंट है? यस, अमाउंट इज 2,000 अमाउंट है. एकदम सिंपल. 18 नंबर में फर्नीचर 18,000 में बेच दिया सर. 18,000, 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी. After that 2,000 is depreciation. So 18,000 हमारी BV means book value. Depreciation chapter में I am going to clear your all this concept. What is BV? What is selling price? BV is book value and we recorded cash account. And second one is furniture. There is no loss, there is no profit because 18,000 का furniture you sold it for 18,000. If there is a loss or profit, how to record for? Wait for depreciation chapter. Cash is a real account. Furniture is also real account and debit what comes in and next one credit what goes out. Okay sir, so entry will be cash account चा debit ला to furniture. Very simple sir, very simple. Yes, ये भी आ गया. Cash collected from Manish is 14,500 as a final settlement. मनीष भाई कितना रुपया नो माल हमने बेचा था आपको? So we sold goods of rupees 15,000 and मनीष जी ने सिर्फ 14,500 दिया. 500 का डिस्काउंट लेके जाओ मनीष जी. So कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट के बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा एंड तीसरा अकाउंट
अकाउंट हमारा मनीष जी आएगा. So cash is a real account, discount allowed is a nominal account sir, and Manish जी is a personal account. यहाँ पे cash comes in होगा तो डेबिट होगा, cash comes in होगा तो डेबिट होगा. Discount allowed is also debited because it's a loss, and Manish ji is our credit. He is a personal, he is a giver. So entry will be cash account debit 14,500, discount allowed debit 500, to Manish account 15,000. I hope up to 19 entries you are clear with all this concept. How much time takes? 7 minutes 30 seconds of your life, and which will give you confidence while passing any journal entry. जो भी journal entry है, yes 20 number, ये थोड़ा सा टेढ़ा है. I will explain you on next in next session बेटा, starting में ही. But today I hope you are clear with this basics. Yes. Okay. बड़ा रिवीजन बैच थोड़ा लेट होगा, एंड गौरी का हो सकता है तो इंटरेक्शन के लिए ले सकते हो आप. यस, कॉन्फिडेंस बूस्टेड मनीषा बोल रही है. वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सर जियो सब्सक्रिप्शन का बाद में देखेंगे बेटा, आज नहीं देखेंगे. जियो सब्सक्रिप्शन का बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा प्रीपेड एक्सपेंसेस और पेबल का है. सर लैगिंग लैगिंग बोल रहा है कोई तो. आई एम अटेंडिंग योर फर्स्ट लाइव लेक्चर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल previous ones. Very good बेटा गुलशन. Come to ICI classes and enjoy ICI classes बेटा. बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक से कवर हो जाता है. So don't worry, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा. सर कॉन्फिडेंस आ गया. सर रोहित बोल रहा है सर यूर स्पीड इज लाइक वंदे मातरम ट्रेन. ओके बेटा, थैंक यू. दर्शिका, कैन यू प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन? डेफिनेटली बेटा, अभी मैं उसी के ऊपर वर्क करूंगा. Yes, understood, sir. Please teach us in English. Yes, beta Vignesh. Don't worry, beta. I explained all journal entries. Debit and credit. It doesn't matter, beta. It is in English only. Okay. So next one, Maina recall कर लिया, sir. Very good, beta. Rashika ji. Beta Vignesh, what happens when I start teaching in the English? फिर then other side के students are there telling me to take it in Hindi. So mixed views are there. So please spare it for 2 to 3 minutes. Important points I always explain it in English, and normally revisions I take it in the Hindi. So that is the Hindi version of Sanket sir. Don't worry. Yes. Yes, Akanksha, welcome beta. Confidence boosted. Yes. पलक अग्रवाल बोल रही है मेरा फर्स्ट लेक्चर है. वेलकम टू आईसीआई क्लासेस पलक. सुभिक्षा बोल रही है सर योर क्लासेस आर अमेजिंग. थैंक यू बेटा. कॉन्फिडेंस बूस्टेड. मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. चलो अभी एक बार पीआरएस के लिए फुल एनर्जी के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बट बिफोर दैट उसके पहले छोटा सा लेजर अकाउंट. फटाफट डेटर्स अकाउंट याद कर लो. डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस. यस सर याद आया. टू सेल्स यहाँ पे आएगा. बाय कैश विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय सेल्स रिटर्न, बाय बैड dates. Then you have by bills receivable, to bills receivable dishonor, and last में to balance carried down. by balance carried down. सर क्या बोल रहे हो? Creditors में exactly reverse. By purchases, visualize now. By purchases credit side पे आएगा. By purchases, then first one is buy balance brought down, by purchases, then to bank, then to deficiency, to purchase return, to discount received, to bills payable, by bills payable dishonor, and to balance carried down. Very simple. Expenses sir, to prepaid, by payable, to cash, by P&L. over income sir, income में yes, to receivable इधर से करें. To receivable, by received in advance, to received in advance, by cash, and to P&L. एकदम simple. By cash and to P&L. So simple sir. Then there are purchases में debit plus credit minus, to cash or to credit by trading account. Sales by cash or by trade by debtors or to trading account. Okay, very simple. Fixed asset था debit plus credit minus, to balance brought down, to bank. Then by depreciation, by bank, that is a selling price. By loss, to profit, by balance carried down. प्रोफॉर्मास इफ क्लियर तो जल्दी से मुझे बताओ आपको प्रोफॉर्मास याद है या नहीं है? जल्दी से बताओ, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट इन द बेटा फेस टू फेस क्लासेस. तो मुझे आपका परफॉर्मेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई यूर परफॉर्मेंस. तो इतना याद रखो. यस yes beta, we are going to discuss in second half.
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यस आज का मेरा स्केड्यूल क्या है? आज का मेरा स्केड्यूल है, यू कैन सी हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेक टुडे। आज मैं लूंगा आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट सेकंड हाफ में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डोंट वरी, 4 प्रॉब्लम्स वी हैव कंप्लीटेड, आई नो माय रिस्पांसिबिलिटीज, और मैं उतना कंप्लीट करके दूंगा। यस 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 सर, करेक्ट। ऑल प्रोफॉर्मस क्लियर? कितने प्रतिशत बच्चे मेरे स्पीड से बात कर सकते हैं? कितने हैं? चलो जल्दी से बताओ सर। यस, वी नो आवर स्पीड। आप लोग आज का चैलेंज फॉर द डे, यू हैव टू टेल मी ऑल, नॉट मी, इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन आंसर एनी प्रोफॉर्मा, एंड प्लीज स्टॉप वॉच लगा के करो, प्लीज यूज टिक टिकी जी। ओके, टिक टिकी जी को स्टार्ट कर देना। यस, वेरी गुड। यस, एनी न्यू स्टूडेंट बेटा आज? सो आईसीआई क्लासेस को वेलकम बोलने के लिए बेटा कितने बच्चे हैं? टुडे इज अ फर्स्ट क्लास, एंड बीआरएस से प्लीज डोंट मिस इट। बीआरएस एंड अदर चैप्टर्स दे डू नॉट हैव बेटा एनी रिलेशन। अरे वाह 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 वाह, आज तो मेनी स्टूडेंट्स दे आर अटेंडिंग, वेरी गुड बेटा। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सीए कोर्स? डेली रिवीजन। Whenever you are starting your maths subject or law subject, or whenever economics you are going to start with, so first thing to yourself, first start basics of this subject. Maths में all formula write it in one notebook, and every day recall it with your friend. Okay, friend क्यों चाहिए? Only for recalling. बस CA course में friend की उतनी जरूरत है, not for other things. Yes. चलो 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 चलो, ओके। चलो चलो चलो, सॉरी। यस, अभी आ जाओ। बीआरएस 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 की फाइल, कम टू योर 100 पेजेस बुक। टुडे इज ओनली 100 पेजेस का बुक लिखना है आपको। यस, राइट डाउन इन 100 पेजेस बुक। टुडे इज अ कॉन्सेप्ट डे ऑफ बी और एस। टिकटिकी जी का टाइम हो चुका है, जाइए टिकटिकी जी, बाय बाय। चलो, सो बीआरएस, why BRS? First thing I want to clear your logic. Sir, how many of you? Okay, BRS का लॉजिक, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद BRS कॉन्सेप्ट? चलो जल्दी से बताओ, BRS कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? यस बेटा। BRS, व्हाई दिस इज नीडेड? यू ऑलरेडी स्टडीड कैश बुक, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे? टुडे
what we are going to see. Suppose एक एंट्री बताता हूँ, very simple entry. So today we will prepare bank also, bank का statement and संकेत सर का statement. SS book एंड संकेत सर का पासबुक. चलो कौन सी बैंक है संकेत सर की? बहुत सारी बैंक्स में से आईसीआईसीआई लेते. चलो आईसीआईसीआई बैंक, आज हम लोग लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, अभी एसएस का बुक देखते हैं. एसएस का बुक, ओके. अभी एसएस का बुक सर, फर्स्ट एंट्री इन माय लाइफ, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? आई डिपॉजिटेड आई ओपन अकाउंट ना बेटा, डिपॉजिटेड अमाउंट in ICICI Bank. Okay. So first thing, you want to open one bank account with ICICI Bank. What first step towards opening of this account? You will better give them documents. कौन से documents देने पड़ेंगे? Documents are very simple. आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा. आपको एक कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो कैश डिपॉजिट करनी पड़ेगी. कोई बैंक्स होते हैं करंट अकाउंट होना रहेगा, तो सेविंग अकाउंट का उनको ये लगता है, क्रॉस चेक लगता है. ओके, सो करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस, सेविंग अकाउंट इज फॉर बेटा यू एंड मी, जैसे हमारे पास होते हैं. बिजनेस के मेरे अकाउंट्स अलग है, तो करंट अकाउंट होता है उसमें, एंड नॉर्मली सेविंग अकाउंट में मेरे सब ट्रांजैक्शंस होते हैं. सो डिपॉजिटेड अमाउंट, ओके, विथ आईसीआईसीआई बैंक ₹5,000. सो व्हाट इज माय फर्स्ट एंट्री? मैं एंट्री करूंगा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट. आईसीआईसीआई का बैंक है ना, बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, बैंक इज माय एसेट, सो माय बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, सो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. माय एंट्री विल बी ICICI bank account debit to cash account. Simple. Suppose 1,000 से I open my account. Actually, ICICI bank में 5,000 is minimum amount that required. So ICICI bank account debit to cash account. Okay, 1,000. Let's take it for understanding purpose. It's a अभी what is the entry by ICICI bank? They got the cash. See, ICICI bank क्या entry करेगी? They got cash. So cash comes in for them 1,000. So 1,000. And they won't record ICICI बैंक. अपने अकाउंट में अपना नाम रहेगा क्या? इन एसएस बुक यू हैव आईसीआईसीआई अकाउंट, तो आईसीआईसीआई अकाउंट में एसएस का अकाउंट. चलो लेट्स टेक माय नंबर. माय अकाउंट नंबर इज एज्यूम 007. ओके, सो मेरा अकाउंट नंबर है बेटा जेम्स बॉन्ड का अकाउंट नंबर SS 007 इज माय अकाउंट नंबर. इट्स वेरी सिंपल. ओके, आई डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक. So ICICI bank account च्या डेबिटला to cash in my books. In my books I will open ICICI account and ICICI bank will open SS account. इधर होगा एसएस अकाउंट और इनके पास होगा आईसीआईसीआई अकाउंट. ओके, इफ आई ओपन दिस लेजर, आईसीआईसीआई एंड आईसीआईसीआई ओपन एसएस अकाउंट, तो आईसीआईसीआई क्या करेगा? सॉरी, एसएस क्या करेगा? एसएस के बुक में इट इज ऑन द डेबिट साइड. ऑन द डेबिट साइड क्लियर है? आईसीआईसीआई को डेबिट दिया टू कैश. ओके, एंड व्हाट दे विल डू बेटा? बाय कैश. एसएस को उन्होंने क्रेडिट किया बाय कैश. सो सी, एसएस के बुक में विच अकाउंट इज ओपन? आईसीआईसीआई डेबिट बैलेंस. आईसीआईसीआई को डेबिट बैलेंस है, और आईसीआईसीआई के बुक में एसएस को क्रेडिट बैलेंस है. सर हमारा डेबिट, उनका क्रेडिट, बट ऑब्वियस काउंटर पार्टी has, suppose in my books if ICICI shows debit balance, तो मेरे लिए रिसीवेबल है, तो for them it is a payable. Very simple logic. So एक चीज याद रखो, in my book ICICI bank has if debit balance, so बैंक के बुक में संकेत सर has credit balance. Write down in your 100 pages book. 100 pages के बुक में लिख दो. First thing, in SS book ICICI credit balance.
and in ICICI book ओए सॉरी ICICI डेबिट बैलेंस, तो ICICI के बुक में SS क्रेडिट बैलेंस. ओके, राइट डाउन इट प्रॉपरली. एसएस के बुक में ICICI डेबिट बैलेंस, तो एट द सेम टाइम एसएस के बुक ICICI के बुक में SS हैज क्रेडिट बैलेंस. व्हेन बेटा दिस इज एसेट फॉर मी, दिस इज एसेट फॉर मी. ओके, इसको we will call it as, this is asset for me, this is called it as favorable balance. What is called it as? This situation when I have receivable from ICICI. Debit balance means receivable. So in my books, it is receivable. So it is a favorable balance. It is a favorable balance. Okay. So this problem is a normal problem. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? It's a normal situation. It is called as normal situation. Easy छे, एकदम easy. It is called as normal situation. Yes, normal situation. मतलब क्या? I will receive money from ICICI Bank. ICICI Bank से मुझे receivable होगा. Today I will show you my one account. मैं आपको एक मेरा account बताऊंगा. So just for your concept clarity, जिसमें मैं transactions ऐसे तो करता नहीं हूँ. So I will show you one account. देखो, अभी सेचकन सिचुएशन लिखो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. इन एसएस बुक इफ ICICI क्रेडिट बैलेंस, इसको बॉक्स करो, ऊपर वाले को बॉक्स करो, पुट इट इन बॉक्स. हाँ बेटा. देन इन ICICI बुक SS हैज डेबिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मींस बेटा इट्स अ पेबल. इट्स अ पेबल. क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है. इट्स अ पेबल. सो पेबल मतलब बेटा इट इज ओडी प्रॉब्लम, ओवरड्राफ्ट का प्रॉब्लम है. और यू कैन कॉल इट एज अनफेवरेबल, नॉट फेवरेबल बैलेंस, और it is unfavorable. Unfavorable means I have to pay ICICI. It is not receivable, it is payable. Got the concept? ओडी का प्रॉब्लम कैसे दिखेगा? ओडी का प्रॉब्लम कैसे दिखेगा? समझ में आया क्या आपको? यस सर, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस. ठीक है, चलो. ओके. अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा. एकदम इजी है. एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? चलो, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम एंट्रीज. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम एंट्रीज. अभी बेटा ये ICICI बुक को क्या बोलते हैं? हमारे बुक को क्या बुलाते बेटा? दिस बुक इज कॉल्ड एज कैश बुक, CB. एंड ICICI के बुक को हम लोग बोलते हैं पासबुक. वी कॉल इट एज पासबुक. ओके, दिस इज CB, दिस इज PB. CB, PB, कैश बुक, पासबुक. एनी डिफिकल्टी? अरे इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा? ये वाला लेक्चर लाइव में अटेंड करो, मुस्कान, नो प्रॉब्लम बेटा. इसमें क्या डिफिकल्ट है यार? एसएस के बुक में ICICI बैंक को अकाउंट दिखेगा, मेरे बुक्स में ICICI का अकाउंट, ICICI के बुक में मेरा अकाउंट. यस प्रेम, व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस? इट्स सो सिंपल. Other students are saying it's very simple, sir, till now. OD means beta, it's a, I have to pay ICICI Bank. If I have taken a loan,
If I take a CC, cash credit. Now, what is cash credit? Overdraft. I will explain you later. Don't worry. So, SS जो है ना, SS को ये पे करना है. समझ में आ रहा है? SS को पे करना है, तो it's a liability. Liability छे, तो OD छे. OD means overdraft. OD means overdraft. Overdraft. Now, cash credit, overdraft. These words we have to understand it later. Don't worry. Yes. अब तक क्लियर है? ओवरड्राफ्ट उल्टा है साक्षी. ओवरड्राफ्ट नहीं समझ में आ रहा है? ये उल्टा है, मतलब एसएस को पैसा देना है. लोन लिया ना बेटा, लोन लिया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा. ओके, चलो. नाउ व्हाट हैपन? चलो देखो जल्दी से. यस बेटा, कोमल, वेरी गुड बेटा. नाउ वी विल पास सम एंट्रीज. सम एंट्रीज, राइट डाउन सम एंट्रीज. ठीक है, सम एंट्रीज. चेक, राइट डाउन. इधर लिखो सीबी, डिवाइड इट इन टू पार्ट्स. पीबी, सीबी, पीबी. सीबी किसका बुक है? अवर बुक. अवर बुक इज कॉल्ड एज सीबी. बैंक का बुक इज अ पासबुक. बैंक का बुक इज अ पासबुक. चेक डिपॉजिटेड. I deposited one check, okay, but not cleared by bank. But beta, bank ne clearing will take some time. What is the process? Yes, I will explain you the process. This is SS Bank, okay. SS Bank है. Sorry, this is SS. SS है, इधर SS की बैंक है, ICICI. चलो, we will take one party. कोई भी पार्टी का नाम लेते हैं. पार्टी नेम, चलो, वन स्टूडेंट नेम अपूर्वा. अपूर्वा है बेटा, एक है स्टूडेंट अपनी अपूर्वा. यस बेटा अपूर्वा, कैन यू टेल मी योर बैंक नेम? चलो सब लोग अपने अपने बैंक के नेम बता दो. अपूर्वा फ्रॉम WRO. यस बेटा, कैन यू टेल मी योर बैंक नेम? एज यू, अपूर्वा का बैंक है HDFC. अपूर्वा का बैंक है HDFC. नाउ व्हाट हैपन? अपूर्वा के पास, अपूर्वा हैज गिवन मी चेक ऑफ 10,000. उसने बोला संकेत सर बहुत बढ़िया सिखाते, आई विल पे हिम 10,000 रुपीज. ओके, ठीक है. सो अपूर्वा ने मुझे चेक दिया. अपूर्वा ने मुझे चेक दिया. यस, अपूर्वा ने, एक्सिस बैंक है उसकी, ठीक है, अभी मैंने HDFC लिख दिया. ओके, सो अपूर्वा, चलो अपूर्वा का मन नहीं नाराज करेंगे, विल राइट एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक इज ऑफ अपूर्वा. वेरी गुड. चलो, सो नाउ अपूर्वा ने गिवन मी अ चेक. सपोज चेक का डेट है 20th March. 20th March को अपूर्वा हैज गिवन मी वन चेक. ओके सर, अपूर्वा ने मुझे चेक दिया. नाउ व्हाट हैपन? आई डिपॉजिटेड दैट चेक. बेटा अभी भी ऑनलाइन नहीं किया, ऑनलाइन नहीं, नो जीपे. हाँ बेटा, जीपे होगा तो 1 सेकंड में अपडेट हो जाएगा. नो जीपे. ओके, प्रीवियसली सपोज चेक देते हैं हम लोग. सो चेक दिया, आई डिपॉजिटेड ऑन 30th March. 30th March. Now what happened? ICICI Bank, suppose Apurva has 50,000 balance. Apurva has 50,000 balance. Sanket sir has 500 rupees balance. संकेत सर का बैलेंस ओनली 500. ओके सर, तो अभी अपूर्वा के अकाउंट से 10,000 विड्रॉ होगा. सो 40,000 एंड आउट ऑफ दैट संकेत सर का बैंक बैलेंस हो जाएगा 10,500. इट्स वेरी सिंपल. ओके, बट नाउ व्हाट हैपन? अपूर्वा पास दिस एंट्री. अपूर्वा ने क्या एंट्री पास की कि ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश. अपूर्वा ने क्या एंट्री की? ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी बैंक, टू एक्सिस बैंक. चेक दिया ना, हाँ, टू एक्सिस बैंक. मैंने क्या एंट्री किया? आई रिसीव्ड चेक एंड आई एम गोइंग टू डिपॉजिट. आई हैव डिपॉजिटेड चेक मींस ICICI बैंक. आई डेबिटेड ICICI, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा टू प्रोफेशनल फीस, और दिस इज माय इनकम. आई विल रिकॉर्ड इट एज प्रोफेशनल फीस. ICICI बैंक टू प्रोफेशनल फीस. नाउ ICICI क्या करेगा? ICICI has paid to me, so to SS account. SS is a creditor ना, हाँ. But when this entry will pass बेटा? 2nd of April, and ICICI will give debit to clearing house. किसको डेबिट देता है? क्लियरिंग हाउस को. क्लियरिंग हाउस means ICICI बैंक is not going to contact directly Axis Bank. ICICI डायरेक्ट एक्सिस के पास नहीं जाता है. ICICI
देयर इज अ क्लियरिंग बैंक। ओके, अभी ये क्लियरिंग बैंक, अभी पुणे में एसबीआई इज अ क्लियरिंग बैंक। एसबीआई के पास सभी चेक जाते हैं ऑल ओवर पुणे के। सो क्लियरिंग हाउस एवरी रिस्पेक्टिव सिटी के अलग अलग होंगे। सो क्लियरिंग हाउस ये चेक जाएगा, ये चेक किधर जाएगा? क्लियरिंग हाउस में। ओके, सो आईसीआई इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली डेबिट एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई इज गोइंग टू डेबिट क्लियरिंग हाउस। एंड एक्सिस बैंक क्या करेगा? एक्सिस बैंक करेगा अपूर्वा अकाउंट डेबिट, अपूर्वा अकाउंट डेबिट टू टू क्लियरिंग हाउस। एंड बेटा दिस क्लियरिंग हाउस प्रोसेस विल टेक मिनिमम 2 to 3 days। ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 3 दिन लगेंगे। सो योर बैंक अकाउंट, योर इन योर बुक इट्स ओके that now your balance is 10,500, but in ICICI book balance will be 500 as on 31st of March, and here in Axis book 50,000 will be a balance. So beta, my balances are not matching। मेरा बैलेंस 10,500 दिख रहा है, बट इन आईसीआईसीआई बुक इट इज ओनली 500। अपूर्वा के बुक्स में, अपूर्वा के बुक्स में बैलेंस इज 40,000 एंड एक्सिस बैंक में 50,000। And therefore this is a process which is called as bank reconciliation statement। So there is a delay, timing difference, because it won't record immediately। So this process is called as bank reconciliation statement। Understood the logic? एक बार हिंदी में वापस से बता दो। देखो, अपूर्वा ने खुश होके मुझे एक चेक दिया, अपूर्वा के लिए खर्चा है, तो ट्यूशन फीस को डेबिट दिया टू एक्सिस बैंक, क्योंकि उसने चेक दिया है तो एक्सिस बैंक का बैलेंस नीचे जाएगा। एसएस क्या एंट्री करेगा? एसएस उसके बैंक की एंट्री करेगा। संकेत सर उसके बैंक की एंट्री करेंगे, आईसीआईसीआई को डेबिट देंगे, टू इनकम बताएंगे कितने का चेक था, 10,000। फिर संकेत सर क्या करेंगे? संकेत सर गए चेक लेके आईसीआईसीआई बैंक में, जाके डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद संकेत सर के अकाउंटेंट ने तुरंत एंट्री मार दिया। क्या एंट्री मार दिया? आईसीआईसीआई टू प्रोफेशनल फीस। ओके सर, समझ में आया। संकेत सर ने तो एंट्री कर लिया, पर अभी आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी? आईसीआईसीआई बैंक को ये प्रोसेस करने को, चेक क्लियर होने को 2 से 3 दिन लग जाएंगे। बराबर है, बीच में छुट्टी आया, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने को 3 दिन लगते हैं। सो वी विल कॉल इट एज क्लियरिंग हाउस को डेबिट देगा आईसीआईसीआई और संकेत सर के अकाउंट में पैसा डालेगा। सो क्लियरिंग हाउस इज अ डेटर एंड संकेत सर इज अ क्रेडिटर। गॉट द कॉन्सेप्ट? बट दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन 2nd of April। पर संकेत सर के बुक्स में तो बैलेंस बढ़ गया, पर आईसीआईसीआई के बुक में बैलेंस बढ़ने को इट विल टेक टाइम। Oh, and this timing difference is called as BRS, Bank Reconciliation Statement, when there is a timing difference। Got the concept? Easy छे। एंड एक्सिस बैंक में फिर क्लियर होगा चेक। एक्सिस बैंक क्या करेगा? अपूर्वा के अकाउंट से पैसा खींचेगा एंड क्लियरिंग हाउस को पैसा देगा। अपूर्वा इज अ डेटर एंड क्लियरिंग हाउस इज अ क्रेडिटर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पास दिस एंट्रीज। मजा आ गया? We got the logic. Yes, we understood it now. Why there is delay? Because bank will take this some time to, first bank has to ask na, ICICI bank will ask Axis bank, Axis bank, do you have balance of Apurva? If Axis bank approves it, then only check will get clear। Otherwise, if ICICI bank, Axis bank को पूछेगा, yes Axis bank, do you have balance of Apurva? And if Apurva के account में only 300 rupees are there, then check will bounce, this check will get dishonored, so this entry is not possible। Okay, so this will take time ना बेटा। आईसीआईसीआई पहले एक्सिस को फोन करेगा, और ऐसा फोन नहीं करेगा, थ्रू क्लियरिंग हाउस देयर इज अ प्रोसेस, बट आई विल टेल यू इट इन द इमेजिनरी वे। सो फर्स्ट आईसीआईसीआई, सो दिस विल टेक टाइम कि एक्सिस बैंक से पहले नोटिस आएगा कि यस अपूर्वा के पास है पैसा, देन ओनली अपूर्वा को अकाउंट को पैसा मिलेगा, जाएगा, अपूर्वा के अकाउंट से पैसा जाएगा, एसएस के अकाउंट में पैसा आएगा, बट दिस विल टेक टाइम एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज बेटा PRS। It's a timing difference। Now you are clear with the concept? Yes or no? Yes or no? चलो 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 चलो।
बताओ 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 जल्दी से. इज इट इजी और डिफिकल्ट? यस. इजी है. बीआरएस सिंपल छे. ऐसे निगेटिव चीजें नहीं पूछने क्या. इफ चेक इज लॉस्ट इन द क्लियरिंग प्रोसेस एंड ऑल दीज. यस. Om Patraji, watch this session once again. I cleared all your doubts. I Yes, already told you ki how is going to start with the Apurva. Apurva will start the process. She will hand over the check to Sanket sir. Sanket sir then will go to ICICI Bank. He will deposit. He will deposit. Then ICICI Bank through clearing house. Axis Bank say will clear the check. Then Apurva ka bank balance is going to reduce from Axis Bank and ICICI Bank may increase ho jayega. But SS or Apurva ne already entry they passed. So because they are not concerned about this process, so they already passed this entry and this time on 31st of March, it will take some time. So their balance as per passbook and their balance as per cash book are not going to match. In cash book, it is showing 10,500. In SS book and in ICICI book, it is only 500 because check is not yet cleared. And in Apurva book, it is rupees 50,000 balance. As per cash book, it is 40,000. But as per passbook, Axis Bank is showing 50,000 because check अभी तक present ही नहीं हुआ है. चेक अभी तक आया ही नहीं है. ओके. अभी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. आई कैनॉट आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. बेटा बैंक कोड ही होगा तो भी एंट्रीज विल बी सेम. ओनली द डिफरेंस इज देयर. क्लियरिंग हाउस की एंट्री क्या होगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ यू ओनली टेल मी. सी, आई वांट टू सी द लॉजिक. क्लियरिंग हाउस क्या एंट्री करेगा? चलो, क्लियरिंग हाउस क्या एंट्री करेगा? लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर दिस. क्लियरिंग हाउस क्या एंट्री करेगा? हिंट, क्लियरिंग हाउस नॉट गिवन डेबिट एनी एसएस और अपूर्वा को. क्लियरिंग हाउस डेबिट्स और क्रेडिट्स ओनली बैंक बैंक. बैंक बैंक को ही डेबिट क्रेडिट करेगा. यस. यस. चलो देखते हैं कितने लोग आप में से एंट्री बता पाते हैं. डोंट मिस अ सिंगल सेशन है बेटा. यस, वेरी गुड. मिसेस शालिनी जी आंसर वेरी फास्ट. सक्षम भाई तो हुशारी छे. ओके. बट मोहम्मद ने एंट्री गलत कर दिया. मोहम्मद बोल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से पैसा आएगा. अरे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. डेटर क्रेडिटर एक्सिस से पैसा आएगा. आईसीआईसीआई को पैसा देना है. हाउ यू आर गोइंग टू डेबिट आईसीआईसीआई बेटा? सुंदरन, डेबिट कौन है? एक्सिस से पैसा आएगा ना. एक्सिस इज अ रिसीवेबल फ्रॉम एक्सिस एंड पेबल टू आईसीआईसीआई. अरे क्या कर रहे हो यार? डेटर क्रेडिटर रिलेशन. हाउ यू आर आंसरिंग की डेबिट आईसीआईसीआई क्रेडिट एक्सिस? सुंदरन क्या कर रहे हो भाई? आईसीआईसीआई को कैसे डेबिट होएगा रे? सोचो ना कौन से बैंक से पैसा आएगा. Rectify your answer. Those who have given wrong answer, write down it once again. क्या करते हो यार? आईसीआईसीआई को डेबिट कैसे कर सकते हो? रिसीवर गिवर नहीं होगा इधर. डेटर क्रेडिटर. डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. They will settle it at the end. How it is debtor receiver giver? First due relationship ना. क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग भूमिका. थिंक लॉजिकली. क्लियरिंग हाउस को डेबिट देगा क्या? क्लियरिंग हाउस को कैसे डेबिट देगा? अपने बुक में अपना ही अकाउंट होता है क्या? इन आर बुक एसएस, इन एसएस बुक वेदर देयर इज एसएस अकाउंट और काउंटर पार्टी अकाउंट. चलो, रेक्टिफाई योर आंसर्स. डेटर क्रेडिट. अरे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ड्यू रिलेशनशिप फर्स्ट.
अरे पैसा नहीं बेटा, ड्यू रिलेशनशिप. व्हाई आई टोल्ड यू ड्यू रिलेशनशिप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. Are you going to apply receiver giver relationship or clearing house? First time they are passing entry. So due relationship, apply logic. कैसे रे तुम लोग करते हो ऐसा? फुल स्पीड में आंसर्स देने चाहिए. अभी गूगल पे में क्या एंट्री होगा वो रियल लाइफ में जाके देखना. अभी सिलेबस में स्टिक रहो. गूगल पे में क्या एंट्री करते मैं आपको रियल लाइफ में आओ. कम फॉर आर्टिकलशिप, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. By talking, by answering to Sanket sir's question, you can improve your basics. Otherwise, it is very difficult. Give wrong answer, it's okay. But at least you will understand, yes, I have given wrong answer. Those who are not typing or those who are watching on Board of Studies, YouTube channel and not on Board of Studies app, beta, you are making mistakes in your life. If you answer my questions, then beta, you can face examination very simple. You will find examination very easy if you answer to all my questions. Remember. Yes. बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया. Now I am going to write these entries. CB एंट्री क्या करेगा, पासबुक एंट्री क्या करेगा. ओके. फर्स्ट थिंग, चेक डिपॉजिट हुआ तो टेल मी whether bank balance, your bank balance, tell me very fast. Suppose anyone has given you check, any person has given you check and that you deposited, your bank balance is increasing or decreasing? Yes, tell me. बैंक बैलेंस क्या होगा? योर बैंक बैलेंस चेक डिपॉजिट के बाद आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है क्या कम होने वाला है? बढ़ने वाला है क्या कम होने वाला है? जल्दी बोलो. Yes, increase. Okay, so entry will be entries ICICI account debit to that person, debtor, who becomes giver. So he has given me a check, debtor होगा, income होगा, कुछ भी होगा. So ICICI Bank to debtor. He has given me a check. What पासबुक में क्या एंट्री होगी? टू एसएस अकाउंट. एसएस को क्रेडिट होगा एंड क्लियरिंग हाउस को डेबिट होगा. क्लियरिंग हाउस को डेबिट होगा. क्लियरिंग हाउस से पैसा आएगा टू एसएस अकाउंट. करेक्ट है? एसएस के अकाउंट में पैसा डालेंगे, क्लियरिंग हाउस से पैसा आएगा फॉर बैंक. करेक्ट है? नेक्स्ट, सेकंड वन, चेक इशूड. सी, डिपॉजिट हुआ तो नॉट क्लियर होता है. चेक इशूड, चेक इशूड मतलब मैंने चेक फाड़ के दिया. आई हैव गिवन चेक टू समवन बट ही हैज नॉट प्रेजेंटेड दैट चेक टू हिज बैंक. तो इधर लाइन होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सिंपल. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. नाउ यू ओनली थिंक एंड टेल मी द एंट्री. चलो एंट्री बताओ. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. चलो बोलो एंट्री. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. फटाफट बोलो.
नो एंट्री कौन बोल रहा है रे? नो एंट्री कौन बोलता है? तो ICICI बैंक, and I will debit creditor. Now he becomes receiver for expenses account debit. Here entry will be SS account debit to clearing house. Third entry. इधर बैलेंस क्या होगा? Decreases. My balance will decrease. पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा. ठीक है. थर्ड एंट्री, बैंक चार्जेस. बैंक charges like check clearing charges or passbook charges or statement charges. Bank collected some charges. Chalo. Beta, we are passing entries. Yes. How exactly going to happen? Check issued. These wordings are important, but not presented means in passbook it is not passed, but it is only for your conceptual clarity. It is only for your conceptual clarity. Okay, don't write check deposited, but not cleared, nikal do, but not presented, just scratch it. Okay. Okay. It is only for your conceptual clarity. What entries bank is going to pass and what entry you are going to pass. Now tell me bank charges. Kya entry hogi? For us it is expenditure. But not cleared is a normally word we are using it. It is only for conceptual clarity. I am passing the entries in both cases. Okay, check deposited ki entry only and check issued ki entry. Now it's simple. Bank charges, balance will decrease. तो ICICI बैंक credit होगा. Balance decrease means ICICI bank credit and bank charges is my expenditure. Bank charges debit. And bank क्या करेगा? SS account debit. Both has recorded this entry. I am not starting with any BRS process. Let's understand, we have to understand how bank is going to pass the entry and how Sanket sir is going to pass the entry. I'm not teaching you any BRS till now. I'm just improving your basics of accounts. Bank charges, SS account debit. SS account debit to income. For it is our expenditure and for their income bank charges. Income bank charges. ठीक है. Fourth entry. Dividend collected by bank. Dividend collected by bank. In both books, both books. So my bank balance is going to increase. My bank balance is going to increase. Dividend is my income. And I will debit. In ICICI bank, we have collected this income. And it is not expenditure for them. To SS, because SS is a creditor. And they will clear it from clearing house. They debited clearing house. They received money from clearing house. Easy, che? So now you understood how bank is going to pass entries. These are some basics. Okay.
हाउ बैंक विल पास एंट्री, हाउ संकेत सर विल पास एंट्री, तो ये हमें समझ में आना चाहिए. वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा, वेट फॉर अ मिनट. संगम, ये मेल मध्ये आहे ना. चलो एक सेकंड क्लोज ऐप करतो. ओके. हम्म. मैं आपको एक सिर्फ स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ. चार्जर देना. एक ही मिनट है बेटा. एक ही मिनट. चलो जाने दीजिए, मैं बाद में ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ. सो इट विल बी इजी फॉर यू.
आपके लिए इजी जाएगा ये। हम्म। नहीं, चलो सॉरी फॉर। यस, थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं बैंक स्टेटमेंट। अभी मैं बीआरएस की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं। बीआरएस प्रोसेस, नाउ प्लीज लिसन इट केयरफुली। प्लीज लिसन इट केयरफुली। स्टेप्स आर वेरी सिंपल। स्टेप 1, बीआरएस प्रोसेस, लिसन इट केयरफुली। अभी सभी चीजें दिमाग में से निकाल दो, मूव ऑल थिंग्स, एंड दिस इज अ न्यू प्रोसेस, सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू मीन्स एवरीथिंग यू हैव टू फॉरगेट कि ये मैंने क्या पास्ट में किया हुआ था। Don't recall anything of BRS of 11-12 standard. Start from fresh. Okay. Sanket sir technique is different for BRS. Let's understand it. Step 1. Step 1. Identify way. Means whether CB to PB or PB to CB. First, you have to identify way of RICO. So you are starting with your book and then you tally with passbook, or you start with the bank book and then tallies with your book. Okay. So balances. Step 2, put box on last book. Means what? If you are moving CB to PB, तो PB को box करेंगे. Box means बेटा, you have to put box on last book. That is CB to PB होगा तो, and PB to CB होगा तो CB को box करेंगे. Now what is the meaning of box? Means you cannot change box amount. So box के amount you cannot change. That's why it is a box. Okay, box करना है. And what is step 3? Try to get answer of box in unbox. तो बॉक्स में जो आंसर दिख रहा है उसको अनबॉक्स में लेके आना है, which is not boxed, that is CB में, and here it is in PB. So जो इधर बॉक्स है उसका आंसर CB में लाना है, एंड कैश बुक को बॉक्स है तो उसका आंसर PB में लाना है. It's very simple. These are the steps. Okay. Over. BRS over. BRS process over. Very simple. Just you have to identify whether balance is decreasing or increasing. Over. BRS topic over. Simple है. चलो. We'll solve some questions. Then you will find it very simple. हम पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओवरड्राफ्ट का we'll do it later. CB is cash book, PB is passbook. Now first time. Yes, write down. ये हो गया लिख के BRS process. Now transaction. Write down. Check deposited but not cleared. What it means? इसका मीनिंग क्या है? चेक डिपॉजिटेड मतलब एसएस के बुक में कैश बुक बैलेंस इंक्रीज, एंड पासबुक में नो एंट्री. चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट किया, वी रिकॉर्डेड इट, our book we recorded, but in passbook no entry. Understood the concept? Very simple. Assume you have to go from CB to PB. CB to PB किसको बॉक्स करना है? PB. Assume 100 rupees is a balance. We have written CB PB.
सीबी का बैलेंस इंक्रीज 100, पासबुक नो एंट्री 0। पुट अ बॉक्स ऑन पासबुक, पासबुक पे बॉक्स रखो, और पासबुक में बॉक्स रखने के बाद बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में लाओ। सो इन बॉक्स यू हैव 0 रुपीज, सो टू गेट दिस 0 वी हैव टू डिडक्ट, सो आंसर लेस आएगा, लेस। आंसर क्या आएगा? लेस। दिस इज अ प्रोसेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कैश बुक का बैलेंस ऊपर जाएगा, पासबुक में नो एंट्री। ओके, दैट फर्स्ट यू अंडरस्टूड। सीबी टू बीबी जाना है, पीबी को बॉक्स लगाया, सीबी में बैलेंस इंक्रीज हुआ 100, पासबुक में 0। किसको बॉक्स लगाया? पीबी को। टू गेट द आंसर ऑफ बॉक्स इन अनबॉक्स, आपको क्या करना पड़ेगा? बॉक्स में 0 है, तो 0 को लाने के लिए -100 करना पड़ेगा, सो आंसर इज लेस। वेरी सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम इट वोंट टेक टाइम। After 5-6 transaction, you can do by your own. It's very simple process. It's very simple process. Okay, chalo, one more transaction, one more transaction. Repeat कर दो। Yes बेटा, नए नए transaction you write it and you can do practice. चलो प्रैक्टिस करनी है। सेकंड वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, but not presented for payment. So first tell me, check issued. Check issued means your bank balance is going to decrease. I issued a check, okay, for repairs and maintenance. I have given a check, but that person has not deposited in his bank. तो मेरे कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस होगा, पासबुक में 0, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस मेरा नीचे जाएगा। ओके, किधर से किधर जाना है? एज्यूम पीबी टू सीबी जाना है। किधर से किधर जाना है? पीबी टू सीबी। सो किसको बॉक्स किया? सीबी को। राइट डाउन सीबी पीबी ऐसा। ओके, सीबी पीबी वी हैव रिटर्न। सीबी में -100, पासबुक में 0, बॉक्स इज -100। बॉक्स किसको है? सीबी को बॉक्स है, तो सीबी का आंसर पीबी में आने के लिए -100, सो आंसर इज लेस। आंसर इज लेस। Very simple process. Very simple process. Very simple process. Please follow my technique. Don't follow your 11-12 standard technique. Starting में it will take time, but after some problems you will find this technique very simple. नई नई दुल्हन को एक्सेप्ट करना घर में थोड़ा दिक्कत होता है, याद रखना। नए दामाद जी को भी एक्सेप्ट करना थोड़ा दिक्कत होता है, बट एक बार फिर वापस यूज टू हो जाते हैं। सो ये टेक्निक थोड़ा अलग है, ओके, बट this technique will give you answers not only in this question, in OD questions also. So this technique is very powerful technique. Okay, third one, चलो पहले क्या याद करने का? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। बैंक ने रिकॉर्ड किया तो बैंक इज पासबुक, सो कैश बुक में 0 and पासबुक में चार्जेस। चार्जेस मींस माय बैलेंस इज गोइंग टू डिक्रीज, सो पासबुक का बैलेंस नीचे गया, पासबुक का बैलेंस नीचे गया। यस, चलो पीबी टू सीबी जाना है। पीबी टू सीबी किसको बॉक्स लगाऊं? सीबी, सीबी को बॉक्स। ठीक है, लिखो इधर सीबी पीबी। सीबी में 0 बट पीबी में -100, बैलेंस इज डिक्रीजिंग। ओके, बॉक्स किसको किया? 0 को। अभी 0 इधर लाना है सामने, ऐड। आंसर इज ऐड। सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल।
Bank charges recorded by bank only. Yes. Fatima ji, it's very simple process. You have to identify. ये मैं दे रहा हूं आपको, पासबुक टू कैश बुक. Okay, we'll solve one question, then you will understand it properly. Okay, we will write all these answers afterwards. ठीक है, पहले हम लोग पासबुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यू विल अंडरस्टैंड द टेक्निक कि सर हाउ सर रिकॉर्ड्स इट. दीज आर सम सिंपल ट्रांजैक्शंस जो मैं आपको बताना चाहता हूं. वेट, इट इज अ न्यू टेक्निक, सो हैव पेशेंस. गिव मी 10 to 15 minutes. I will clear all your concepts. Okay, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए. डाउनलोड नाहीच केलंयस ना? एक मिनट, आई विल स्टडी मटेरियल न्यू भी आ गया. अरे बाप रे, आईसीआई बहुत स्ट्रांगली सब कर रही है. अरे वाह 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 वाह. चलो, यस, नाउ अंडरस्टैंड. हैव पेशेंस. सीए कोर्स कर रहे हो, दूसरा कोई कोर्स नहीं है ये. थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे. हाँ बेटा, मैंने पीबी टू सीबी, सीबी टू पीबी, आई विल डिसाइड द फ्लो. चलिए, चलो, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए. इलस्ट्रेशन 2. सी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस. बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक का बैलेंस है 2,40,000. सो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? सीबी. एंड यू हैव टू मूव टू पीबी. सीबी टू पीबी. सीबी टू पीबी में लास्ट कौन है? पीबी. सो मेक अ बॉक्स. पीबी को बॉक्स किया. वेरी सिंपल. राइट डाउन ओवर देयर. सीबी टू पीबी, पीबी को बॉक्स. चेक इशूड but not presented in bank. Amount to rupees 1,36,000. Think logically. सीबी में और पीबी में क्या होगा? पीबी में 0, because पीबी में entry, no entry, not presented in bank. So PB 0. But check issued means your bank balance in your book is going to reduce minus 1,36,000.
process we'll understand later on. Okay, first identify which balance is increasing or decreasing. Very simple. ठीक है? CB, PB. Next one. Check deposited. Check deposited, but not cleared. So check deposit kiya means my balance is going to increase. Deposit. I received amount. I'm going to receive this amount. But PB में 0 and CB में my balance is increasing. 90,000. BRS process we are not started. 90,000 my balance will go up. My balance will go up. Okay. CB का balance up होगा. PB में कुछ नहीं होगा. We have not started with BRS process. This is just identify which book is affected. हम लोग इतना ही कर रहा है कि कौन सा बुक अफेक्ट हो रहा है. बैंक चार्जेस, CB, PB. Now bank charges. Who has this information? Bank. We do not have information. So CB में 0. In our book, 0. Passbook charges means your bank balance is going down. Minus 300. We have not started with BRS process. We are just identifying whether balance is increasing or decreasing and which book balance, which book ka balance. Now you tell me for fifth entry. Fifth entry का आप मुझे बताओ. Interest credited by bank. Interest credited by bank. Fifth one. Interest बैंक ने क्रेडिट किया. You only tell me. क्वेश्चन पे लिखना है ये. CB 0. We do not have information. And बैंक का क्रेडिट. बैंक क्रेडिटेड मतलब our asset. बैंक का क्रेडिट our asset. Asset मतलब अच्छी बात है. Our debit means asset. Okay. बैंक ने क्रेडिट किया तो हम डेबिट करेंगे. We have not debited, but it's good thing. So it's a deposit. Okay. So our bank balance is going to increase. बैंक का क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट. डेबिट means asset. Asset है तो अपना बैलेंस बढ़ने वाला है. In cash book it is 0. It is only for understanding whether we are going to increase our balance or decrease our balance. In passbook, our balance is increasing 1250. Now we will start with BRS process. First, we identified all transactions. All transactions. Okay. Key effect in our books. We have not started with BRS process. Now, what is BRS process? BRS. कहां से कहां जाना है? CB to PB. किसको बॉक्स किया? PB को बॉक्स किया. Yes, we have box on PB. First transaction, second transaction. Number to number match करेंगे. Second one. Here I will write CB. Here I will write PB. CB में minus 1,36,000 and PB 0. I will put a box on PB and to get the answer of PB मैं इधर क्या करूंगा? 1,36,000 को ऐड करूंगा. सो सेकंड का आंसर है ऐड. इधर लिख दो, साइड में आंसर लिखो ऐड. थर्ड क्या है? CB PB. CB में 90,000, PB में 0. पुट अ बॉक्स ऑन PB. PB के ऊपर जो बॉक्स है वो आंसर CB में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस. सो सेकंड का आंसर है लेस. थर्ड का आंसर है लेस. ठीक है. फोर्थ CB PB. फोर्थ का आंसर क्या है? 0 इन कैश बुक, minus 300. पुट अ बॉक्स ऑन PB. बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में लेके आओ. minus 300. लेस. आंसर इज लेस. वेरी सिंपल. फोर्थ वन. फिफ्थ वन.
CB 0, PB 1250, CB PB 0 1250. Box on PB. To get the answer of PB in CB, add. Answer is add. 1250 add करो. चलो, let's take on calci. 2,40,000. 2,40,000 here. Then add है 1,36,000. Yes. Then less है 90,000. Then again less 300. And then again add 1,250. 286,950. Yes, I'm getting the same answer. 286,950. So this is how you have to do your BRS. You can do it on the RUP page. In exam on the last page, beta, you can do this process, and this process will give you 100% marks. 100% marks. थोड़ा टाइम लगेगा अभी समझने को. You will take some time, but after understanding the BRS process, you will find it very simple. Try to solve other questions also. एक और करेंगे. You have to write it in this 400 pages ka book. So this is your working. In RUP, on RUP page, you can do this in exam. On RUP page. But every time beta you do it in 400 pages ke book mein aa jao pehle. Rectification of errors. So no, don't write anything. I will tell you when to write. Please just take a screenshot of this. Yes, मैं बताऊंगा कब लिखना है आपको. And what to write in next session. So today we started with the BRS process. One more question we are going to solve. It's very simple process, beta. बेटा सी बेटा बीआरएस की प्रोसेस कहां से कहां जाना है. थोड़ा सब्र कीजिए. एक दो सम्स करोगे ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा. सी स्टार्टिंग में वी हैव टू आइडेंटिफाई विच बुक इज गोइंग टू अफेक्ट. आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बुक अफेक्ट हो रहा है, कैश बुक या पासबुक. और बीआरएस प्रोसेस बाद में स्टार्ट करनी है. बीआरएस प्रोसेस बाद में स्टार्ट करनी है. ठीक है, तुरंत बीआरएस प्रोसेस नहीं स्टार्ट करना है. फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए व्हेन यू आर इन द लर्निंग फेज. वन मोर टाइम, चेक इशूड. चेक इशूड मींस व्हाट? इन माय बुक आई इशूड अ चेक. तो मेरे बुक का बैलेंस नीचे जाएगा, पासबुक का बैलेंस 0 ही रहेगा. पासबुक में नो चेंज. चेक डिपॉजिटेड, मैंने चेक डिपॉजिट किया, मेरा बुक का बैलेंस ऊपर जाएगा, पासबुक का बैलेंस उधर ही रहेगा. बैंक चार्जेस, मेरे बुक में 0, पासबुक में नीचे जाएगा, रिड्यूस. इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मेरे बुक में 0, पासबुक का बैलेंस ऊपर गया बाय बैंक ओनली. वंस आई अंडरस्टूड which balances is increasing or decreasing, then beta BRS process we are going to start. CB to PB जाना है, PB को बॉक्स किया. जो मैंने इधर लिखा CB minus 1,36,000, PB 0. I will put box on PB 0. 0 आंसर CB में लाने के लिए, बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सेकंड 90,000 0. 0 को बॉक्स किया, बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. 0 minus 300. पीबी को बॉक्स किया,
-300 का आंसर उधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 से -300 करना पड़ेगा। 01250 1250 को बॉक्स किया, बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इतनी सिंपल प्रोसेस है। वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। BRS you start it later on. First you identify whether cash book balance is increasing, whether cash book balance is decreasing, passbook balance is increasing or passbook balance is decreasing. Identify that and then start your BRS process. BRS process afterwards करो। ठीक है, देखो बैंक पासबुक shows debit balance, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट मतलब बैंक का क्रेडिट, अपना डेबिट, नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम। सो पीबी टू सीबी जाना है। पीबी बिकॉज स्टार्टेड विथ पीबी एंड एंडेड विथ सीबी। यू कैन स्टार्ट बाय सीबी टू पीबी ऑल्सो, डजंट मैटर। पीबी टू सीबी, इधर हम लोग कर रहे पीबी टू सीबी। If nothing is mentioned, you can start from CB to PB or PB to CB. It's your choice. She has issued check 80,000, but only 32,000 presented for payment. Issued, issued मतलब CB में से -80,000, PB में -32,000। CB में -80,000, PB में -32,000 only presented. She received a check 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank. Okay, she recorded in cash book but deposit ही नहीं किया। तो CB में your balance is going to increase. CB positive balance, it's not negative balance. And then passbook में 0. Yes, understood now. A check 22,000 deposited by her but not yet cleared. So CB में your balance 22,000 is increasing, but passbook में there is 0 yet not cleared. Okay, Mr. Gupta deposited 15,700 in her bank. Her bank मतलब passbook, but she has not been recorded on cash book. तो CB में 0, CB में not recorded, but PB में बैलेंस इज इंक्रीजिंग। डिपॉजिटेड, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला तो मेरा बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा 15,700। We have not started with BRS process, my friends. We are just identifying कि CB में क्या हुआ है और PB में क्या हुआ है। बैंक हैज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब डिपॉजिट, मतलब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो CB में 0 and PB positive 1,500 because my balance is increasing, and they deducted 250. So CB में 0 and passbook में -250. Now we will start with the BRS process. So this is just identification. ये समझ में आया क्या? Don't start with BRS process. First identify what happened in your CB, what happened in your PB. Okay, अभी BRS start करेंगे. So till now any query? बॉक्स किस पे लगाना है, कैसे समझ में आएगा? सर एग्जाम में वो लोग दे देंगे आपको, नहीं दिया तो आपके मन में आएगा, वहां से वहां बॉक्स लगाओ, पर एक ही बार लगाओ। CB टू PB जाओ या PB टू CB जाओ। ओके, अभी इसमें मैं PB टू CB गया, बॉक्स किसको लगाया? CB को लगाया। बॉक्स किसको लगाया? CB को लगाया। अभी वर्किंग, चलो अभी वर्किंग देखो, वर्किंग देखो, अभी वर्किंग करेंगे।
किधर से किधर जाना है? पीबी टू सीबी। बॉक्स किसको लगाया? सीबी को। तो जो भी चेंज करने हैं वो किस में करने हैं? पीबी में। वट एवर चेंजेस यू हैव टू मेड, यू हैव टू मेक इट इन पीबी। सीबी फर्स्ट वन, पहला आंसर रोमन वन पहला। सीबी में -80,000, पीबी में -32,000। किसको बॉक्स करूं? सीबी। नाउ सी, टू गेट द आंसर -80,000 इन अनबॉक्स, अनबॉक्स में लाने के लिए मुझे 48,000 माइनस करना पड़ेगा। आई हैव टू रिड्यूस 48,000। 80,000 माइनस है and you have -32,000. Now your mathematics should be strong. Huh? So to get -80,000 in PB, I should deduct 48,000. तो मेरा आंसर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके -80 आएगा। ओके। रोमन टू, रोमन टू देखो। शी रिसीव्ड अ चेक, सीबी में 5,000, सीबी में 5,000, पीबी में 0। सीबी में 5,000, पीबी में 0। 5,000 को बॉक्स किया। सो सेकंड का आंसर +5,000। पहला आंसर क्या था? -48,000। दूसरे का आंसर क्या है? +5,000। इधर BRS। थर्ड वन CB 22,000, PB 0। CB 22,000, PB 0। 22,000 box, add 22,000, add। yes। रोमन 4, CB 0, PB 15,700। CB को बॉक्स, CB को बॉक्स, सो -15,700। yes, less 15,700। 5A 0 and 1,500 इंटरेस्ट था। 0 को बॉक्स, 0 को बॉक्स, -1,500। B 0 -250। CB को बॉक्स, +250। सो -1,500 and +250। चलो, सो टेक ऑन कैल्सी। कैल्सी पे लो। यू स्टार्टेड विथ 1,50,000। 1,50,000 -48,000 +5,000 +22,000 -15,700 -1,500 +250। 1,12050। yes, I am getting the same answer. This is working. You can take a screenshot and you can revise it. एकदम इजी वर्किंग है। So before starting BRS, आकृति एक बार खुद से कर बेटा, खुद से कर। बहुत सिंपल है ये। आइडेंटिफाई द वे, किधर से किधर जाना है। चलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया, तो सीबी में तो हुआ नहीं, और बैंक ने क्रेडिट किया मतलब एसेट, हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो अपना बैलेंस बढ़ेगा पासबुक में, तो 1,500। मोहम्मद अभी कंफ्यूज किया बेटा। कैशबुक में चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा? कैशबुक का बैलेंस -80,000, और पासबुक में सिर्फ 32,000 क्लियर हुआ। चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस नीचे जाएगा, -80,000 एंड -32,000। मैं पहले ही बोल रहा हूं, यू डोंट हैव टू स्टार्ट विथ योर बीआरएस प्रोसेस इमीडिएटली। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि सीबी में क्या हुआ है, पीबी में क्या हुआ है, सीबी का बैलेंस ऊपर गया क्या नीचे गया, आइडेंटिफाई वो कीजिए। यू डोंट स्टार्ट विथ बीआरएस प्रोसेस इमीडिएटली। बीआरएस एंड है, फर्स्ट आपको क्या हुआ है वो समझ के लेना पड़ेगा।
रिविजन्स किसकी करनी है? यस, रिविजन्स। देखो अभी अभी वन मोर टाइम, 5 मिनट्स की क्विक रिविजन। वे आप लोग किधर से किधर भी जा सकते हो। सर फॉर्मेट सौरव, फॉर्मेट में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द आंसर फॉर्म। अभी आज आपको सिर्फ वर्किंग समझ के लेना है। टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वर्किंग। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, सी नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ओडी क्वेश्चन। ओडी, डोंट वरी, ओडी इज ऑल्सो वेरी सिंपल, डोंट वरी बेटा, आई विल टीच यू। ओडी भी बहुत सिंपल है। ओडी मीन्स व्हाट? इट्स अ लाइबिलिटी। ऊपर के क्वेश्चन में था एसेट, नाउ वी हैव टेकन अ लोन। सो बेटा दिस क्वेश्चन इज अ एक्सेप्शन क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट ऑन द क्वेश्चन एक्सेप्शन। प्रोसेस वही, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस, बट ओनली फाइनल आंसर इफ यू आर गेटिंग लेस आंसर तो यू हैव टू ऐड। ओके, वेट आई विल टेल यू, डोंट वरी। Balance in OD as per cash book. OD liability. So you have to write exception on the question. Exceptional. Exceptional question. Exceptional means OD question. Exceptional मतलब OD question. Okay? अभी क्या होगा देखो, सेम प्रोसेस। वेट, इंटरेस्ट ऑन ओडी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ओडी, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट 160 इज एंटर्ड इन पासबुक, इज एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में एंटर किया 160। सो बेटा इंटरेस्ट वी हैव टू पे, वी हैव टू पे। तो सीबी में 0, सेम प्रोसेस। डोंट स्टार्ट विद बीआरएस प्रोसेस, बीआरएस इज आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट आइडेंटिफाई, सीबी का बैलेंस 0 है एंड पीबी -160। पीबी कितना है? -160, बिकॉज इट्स अवर एक्सपेंडिचर, वी हैव टू पे। पे करना है तो अपना बैंक बैलेंस नीचे जाएगा। ओनली पासबुक में हुआ है, पासबुक में हुआ तो -160। डोंट वरी अबाउट बीआरएस, बीआरएस इज अ सेकंड प्रोसेस, पहले आइडेंटिफाई करो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया मतलब हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मतलब एसेट के अपोजिट, तो अपना बैंक बैलेंस नीचे जाने वाला है। अपना बैंक बैलेंस वी आर गोइंग टू रिड्यूस, पर सीबी में 0, सीबी में 0 एंड पासबुक में -400। सीबी में 0, पासबुक में राइट डाउन -400। नाउ अंडरस्टूड? यस। सौरव बोल रहा है मुझे 11th में पासबुक बिल्कुल बीआरएस समझा नहीं था, पर आप गजब हो, आपने पूरा समझा दिया कॉन्सेप्चुअली। यस बेटा। अमन, मैंने जो टेक्निक दिया है वो फॉलो करना बेटा। यू कैन यूज एनी अदर टेक्निक, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी दे सी अकाउंटिंग इज एन आर्ट, every person has its different, see final answer will be same but explanation might be different. okay, किसी का हर एक का अपना अपना तरीका है। so those students who are following me from the first day, तो उनको मेरा टेक्निक सही लगता है। यू कैन वॉच दूसरे फैकल्टीज का सोचा तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो इज बेटर एक ही भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। चलो नेक्स्ट वन, टेल मी फॉर फोर्थ, टेल मी फॉर फोर्थ। चलो बॉक्स बाद में करेंगे, बॉक्स बाद में करेंगे, बॉक्स का सोचो मत, पहले बेसिक सोचो। बीआरएस इज अ सेकंड स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू राइट कि यूर बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। चेक इशूड बट नॉट इन कैश, मतलब सामने वाले ने अभी तक पैसा उठाया नहीं। सो चेक इशूड मीन्स इन अवर बुक -11,68,000, बट इन पासबुक 0, पासबुक में 0। पासबुक में 0।
यस, पहले सीबी लिखो फिर पीबी लिखो. डोंट गिव मी आंसर एड और लेस डायरेक्टली. आई वॉन्ट आंसर सीबी में क्या होगा, पीबी में क्या होगा. सीबी, check paid into bank but not cleared. So paid means in our book we recorded, in our book we deposited. Paid मतलब deposited. Confusion होता है बच्चों को. Check paid means deposited. CB में 22,17,000. Bank balance is going to increase in our book, but बैंक ने कुछ भी नहीं किया, zero. Interest on investment collected by bank and credited in passbook. So CB में zero and bank ने credit किया. Bank credit we will debit. Okay, so debit है तो asset है, तो balance is going to increase. So 12 लाख रुपया पासबुक में ऐड होगा. पासबुक में 12 lakhs. ठीक है, अभी आगे की प्रोसेस. कैश बुक से पासबुक जाना है. सीबी का बैलेंस दिया है, सीबी टू पीबी. बॉक्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है. ओडी मींस लाइबिलिटी प्रॉब्लम. नाउ वन बाय वन. टू सीबी में कितना था, टू का 0. पासबुक -160. पासबुक -160. पुट अ बॉक्स ऑन -160. बॉक्स का आंसर सीबी में लाओ -160. बट ओडी प्रॉब्लम है, देयरफॉर ऐड. ओडी का प्रॉब्लम होगा तो ऐड करना है. एक्सेप्शनल आंसर इज माइनस, बट ओडी प्रॉब्लम अपोजिट साइड, सो -160 विल बिकम प्लस. ये याद रखो. एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सेम प्रोसेस, -160, बट फाइनली यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस साइन. माइनस के बदले में यू विल डू ऐड. ओके, बिकॉज इट्स अ एक्सेप्शनल प्रॉब्लम. इट्स एन एक्सेप्शनल प्रॉब्लम. सो आंसर इज +160. ओडी है तो अपोजिट है. ओडी है तो अपोजिट है. ओके, +160. नेक्स्ट, थर्ड वन. सीबी 0. पासबुक -400. पुट अ बॉक्स ऑन पासबुक, इधर -400. ओडी देयरफॉर ऐड. ओडी है तो ऐड है. ऐड 400. ऐड 400. ओडी के प्रॉब्लम में, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम में अपोजिट साइन. संकेत सर्च टेक्निक. एक्सेप्शनल प्रॉब्लम अपोजिट साइन. बैंक चार्जेस 400. फोर्थ क्वेश्चन. चेक इशूड -11,68,000. पासबुक में 0. पुट बॉक्स ऑन 0. +11,68,000. ओडी देयरफॉर लेस. ओडी देयरफॉर लेस. 11,68,000 लेस. चेक डिपॉजिटेड. फिफ्थ वन. सीबी में 22,17,000. पासबुक में 0. पुट अ बॉक्स ऑन 0. -22,17,000. ओडी देयरफॉर ऐड 22,17,000. ओडी છે તો એડ છે, અપોઝિટ છે. ઓકે, લાસ્ટ વન. सीबी 0. पीबी 12 lakhs. पीबी बॉक्स +12 lakhs. ओडी है तो लेस है. लेस 12 lakhs. चलो करो प्रॉब्लम. आज तो टाइम किधर गया समझा ही नहीं. 6340. टेक ऑन कैलसी. 6340 +160 +400 -11,68,000 +22,17,000 -12 lakhs. So final answer -144,100. -144,100 as per passbook.
एंड पासबुक के हिसाब से -144,100 मतलब ओडी नहीं है, ये फेवरेबल बैलेंस है। दिस इज नॉट नाउ ओडी, ओडी नहीं है। ओडी होता तो पॉजिटिव आया होता। यू स्टार्टेड विथ पॉजिटिव, यू आर एंडेड विथ निगेटिव, इट मीन्स इट्स नॉट ओडी नाउ, इट्स अ पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस। यू कैन सी दिस इज फेवरेबल बैलेंस 144,100. Yes, I am getting the same answer. 144,100. It's not OD now, it's a favorable balance. Opposite of OD, so favorable. या एमपी था, या एमपी था। -144,100 मतलब नॉट ओडी नाउ बिकॉज यू स्टार्टेड विथ ओडी बट यू एंडेड विथ माइनस ओडी। माइनस ओडी मीन्स व्हाट? माइनस ओडी मीन्स फेवरेबल। इस आईएमपी बेटा लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। यस, एटलीस्ट यू अंडरस्टूड व्हाट इज द टेक्निक ऑफ ओडी क्वेश्चन। ओडी है तो क्या करना है बेटा? ओडी है तो क्या करना है? यस, अभी आज क्या करो आप? यू फर्स्ट रिवाइज ऑल these 3 questions 2, 3, 4 and solve 5, 6, 7 also. Try to get the answer. What is adjusted cash book? What is BRS? Try to solve. In next session I am going to explain you illustration number 5. Today small break here. We will meet within 10 minutes because today we are already late. 12:47 हुआ है, बट 10 मिनट्स का ब्रेक लेके एक छोटा सा ब्रेक ले लो। या यू डोंट वांट ब्रेक नाउ? यू वांट ब्रेक? यस, ब्रेक देना है क्या बेटा? या शुड आई लीव यू एट 1:15? यू वांट ब्रेक और शुड आई लीव यू एट अर्ली? बेटा 1:15 को छोड़ू? प्लीज हैव पेशेंस, देखने दो। रिजल्ट आया है आज, ऑलरेडी वेरी लेस रिजल्ट बेटा। फ्यू स्टूडेंट्स आर पास्ड। लीव एट 1:15। चलो 1 मिनट उधर के उधर ही मैं आपको देता हूं, 1:15 को छोड़ूंगा। ये बीआरएस कैसे लगा आपको? यू आर फाइंडिंग इट सिंपल? देखो बेटा, रिवीजन करने से ना, और गारंटी से बोलता हूं, रिवीजन करने से और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिवीजन करने से और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग बीआरएस तो बेटा यू मे फाइंड इट्स डिफिकल्ट, बट जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? कि वेदर सीबी का बैलेंस डिक्रीज है। डोंट स्टार्ट विद बीआरएस, इज अ सेकंड स्टेप। First identify whether this affects my CB, whether this affects my PB. Once you understand what is how it gets affected, then decide the flow, CB to PB or PB to CB. CB to PB होगा, PB को बॉक्स करने का, बॉक्स का आंसर अनबॉक्स में लाना है। PB to CB होगा, CB को बॉक्स करने का, PB का आंसर CB में लाना है। ओके, देन बेटा सेकंड स्टेप क्या है बेटा? सेकंड स्टेप क्या हुआ? यदि ओडी का प्रॉब्लम होगा, ओडी का प्रॉब्लम, 2 लेक्चर्स है रे मेरे पास, डोंट वरी। ओडी का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग रिवर्स सोचेंगे। जो लेस आंसर होगा वो ऐड करना है और ऐड का आंसर लेस करना है। ओडी मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? इजी? सम स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट, बट बेटा इन नेक्स्ट सेशन I will show you passbook also. हाँ, सी बेटा, जो बच्चे पेशेंस रखते हैं ना, पेशेंस, वही सीए बन पाते हैं। One thing make sure, those students who are impatient, means I am also telling you same story. I was very impatient in my first attempt, but CA taught me how you have to keep a patience. सीए ने मुझे, मेरे में भी मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, आपसे ज्यादा इम्पेशेंट हूँ। सपोज हमारे बंदे ने फोन नहीं उठाया ना, मैं 10 बार कॉल करेगा, इतना इम्पेशेंट हूँ। ठीक है, सपोज एक चीज मुझे नहीं मिली ना, फटाफट वही के वही चाहिए। पर सीए में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पेशेंस से
ये सिखाने के टाइम पे आई कीप ऑल माई पेशेंस व्हेन आई वाज इन सीए कोर्स, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए, तब भी मेरे में बहुत पेशेंस थे। अभी भी हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टी ने गलती से फोन नहीं उठाया ना, प्रिया मैम को मैं इतना तंग कर दूंगा ना, दो दो तीन तीन बार फोन लगाऊंगा, सीमा मैम को भी दो दो तीन तीन बार। वो पेशेंस मेरे में नहीं है आज भी। ठीक है, तुरंत मैं ऐसा कि ये मुझे बताना है, ये चेंज लाना है। बट ये जो है ना, ये आप लोग एटलीस्ट कोर्स में मत कीजिए। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं बेटा आपको, क्यों मैं बता रहा हूं, क्यों आपको फर्स्ट टाइम है ना, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिलीव मी, बट when you do it logically, it will be in your mind for next 25 years, 30 years. If you ask me sections today also, I can tell you any section of income tax after, any nahi, but most of the income taxation sections, though I'm not doing regular study of income tax, I'm not a faculty of income tax, but if you ask me, sir, section 32 क्या depreciation है, सर चार्जिंग सेक्शंस कौन से, सैलरी का 15 है, अकाउंटिंग में हाउस प्रॉपर्टी का 18 है। सो ये जो चीजें ना 15 to 17 होगा, या 35 सेक्शन क्या है तो साइंटिफिक रिसर्च है। सो इनकम टैक्स में मैं ये चीजें आज भी याद है आफ्टर 15 years। व्हाई? बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। आई ओनली गो बेटा विथ लॉजिक, आई नेवर स्टडीड विथ मैजिक। नो शॉर्टकट टेक्निक्स फॉर योर सक्सेस, रिमेंबर। सर याद रखो कि जब भी सीए कोर्स करना है ना, 100% आपको समझेगा जरूरी नहीं है। यू हैव टू सिट फॉर many hours on one place, and then only beta your result will be positive result if you are average student। आज का रिजल्ट क्या है? 11% ग्रुप 1, 31% ग्रुप 2। ग्रुप 2 मतलब बेटा दे आर गिविंग इट फॉर मेनी टाइम्स, सो दे क्लियर इन दिस वे, एंड आईसीआई वांट्स टू बेटा शिफ्ट टू न्यू कोर्स, तो थोड़ा सा रिजल्ट है। एंड ग्रुप बोथ ग्रुप 8% ओनली। See, this is where 8%, those who are giving both groups together, out of only 100, 8 students cleared. What about 92 students? Better they have to be very fit mentally. Then only they can go for both groups. सर फेल्योर का कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फेल होते हो ना आपके टाइम पास के वजह से, तो आपको दिक्कतें आती है, ये याद रखना। सो जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मन में से ये निकाल दो कि आई एम डूइंग समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं सीए कर रहा हूं मतलब मैं बहुत कुछ अलग कर रहा हूं। नो, यू आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी थिंग विच इज वेरी लॉजिकल वन, विच इज नॉट मैकेनिकल थिंग्स इन आवर कोर्स। ओनली आई कैन से मैथ्स इज ओके बेटा, बट इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश होगा, या इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश भी मैं बोलूंगा नहीं, बट लॉ इज लॉजिकल, your economics is logical, your bck is also logical, accounts is logical, so at intermediate level also all subjects are logical। okay, और हम लोग वही तो नहीं करते, we take it as a pressure। enjoy your study। आप जितना एंजॉय करके स्टडी करोगे ना, जैसे मूवी देख रहे हो, तो यू विल ऑलवेज फील लाइक फ्रेश कि यस मुझे सीए करना है। बट इफ यू टेक इट एज बर्डन, यू आर नॉट गोइंग टू पास। ये करना है, नो। नाउ सी बीआरएस में भी दो स्टूडेंट्स हु डिड इट इन 11th स्टैंडर्ड, बट दे अंडरस्टूड न्यू टेक्निक फ्रॉम संकेत सर। माइट बी योर टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम माय टेक्निक, but now you understood कि संकेत sir's technique is different one। You grasp that technique and now you will apply only my technique। I am assuring you, I am giving you challenge कि आप यही टेक्निक अप्लाई करोगे and you will get good marks। You will never go wrong। If only problem, you will reverse the sign। If normal problem, you are going to assign that sign। तो यही है, पहले आइडेंटिफाई सीबी में जाएगा या पीबी में जाएगा, एंड देन अप्लाई फॉर पीआरएस स्टेटमेंट का। का
Chalo. Okay, we'll do one problem of rectification. रेक्टिफिकेशन का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. चलो. ये पण ठेवून द्या. We completed till illustration 4. So today we'll start with illustration 5 in next session, beta. Yes, BRS concept. Now you can do other questions also. So BRS, first we will complete BRS in next session, and remaining problems we are going to complete for rectification. एक problem ले लेता हूँ. Illustration number 5. Okay. चलो. Write down. Correct entry. Wrong entry. Rectification entry. Correct entry, wrong entry, rectification entry. Chalo. Let's start. Ilu 5 में A. An amount of ₹100 was received from D Das, but has been omitted to enter in cash book. Cash book है तो whole entry is wrong. Okay, book में पूरा entry गलत हो जाएगा. So entry will be cash account debit. Correct entry to D Das. And wrong entry, no entry. So rectification entry, cash account debit to D Das. Very simple. B, cash to D Das, no entry, rectification. Over. The total of return inward book has been cast 100 short. Short है तो same side. Short है तो same side. You can write over there. And return inward means sales return. Sales return means debit. Sales को credit, sales return debit. So return inward to suspense. Return inward to suspense. 100, 100. Yes, you can write return inward to suspense. C. Purchase of office table 300 pass through purchase day book. Furniture account debit. Furniture comes in to creditors. 300, 300. But you have debited. इसको डेबिट कर दिया आपने. Purchases to creditors. So creditors, creditors, same. Furniture को डेबिट to purchases. 300, 300. Simple. Already done na beta, all these entries. 375 paid to workmen for making showcase. Showcase means furniture. So correct entry, furniture debit to bank. 375. But what happened? You debited wages account. Wages to bank. 375. Bank, correct. So entry will be
Furniture same side. Wages opposite side. Over E. A purchase of 67 had been posted to trade payable at 60. Purchases debit to creditors, but purchases debit 67 to creditors 60 to suspense 7. Purchase same. Creditors we have to increase 7 and suspense we have to cancel 7. Suspense to creditors. F. A check received 200 from PC Joshi, dishonor, and debited to allowance account. Check received dishonor. So to bank. PC Joshi. PC Joshi to bank. But you have debited it to allowance. Allowance to bank. Amount is 200. Bank correct. So PC Joshi and allowance is going to cancel. To allowance 200. 200. Simple. Easy है? No beta, no. Nishchay, these are the same answers. Same answers beta. So narrations लिख देना बाद में. Simple way में narrations. G. 1000 paid for motorcycle. Charge to miscellaneous expense. Motorcycle account debit to bank. Recorded as miscellaneous expense to bank. Bank correct. So motorcycle को debit to miscellaneous expense. Over 1000. Nothing difficult in this question. No difficult transaction. 1000. No? Goods amounted to ₹100. Now correct entry. I will record over here only. Was returned by customer. Okay. Sales return. So sales return debit to debtors. No entry. So same entry, sales return to debtors. अच्छा, this one is IMP. Now ICI ने क्या किया? Purchase a motorcycle. You can add this for own use. Motorcycle for own use. Please add this. Add this one. Yes, ये थोड़ा सा गलत है. ये drawings debit होगा. Okay, ये मेरे से mistake हो गया. So instead of motorcycle, एग्जाम में वो लोग clarity देंगे. In exam they will give you the clarity. So drawings to miscellaneous expense. So add this one. मेरा discussion हुआ था मैम के साथ. So it is for personal use. Motorcycle for personal use, for own use. So you can add this own use. Beta. This is IMP1. G is IMP. Debtors. And last one. A sale 200 to Singh was wrongly credited to his account. Singh and company debit to sales. But what happened? What happened? टू सेल्स आपने करेक्ट रिकॉर्ड किया बट सिंह को क्रेडिट किया एंड सस्पेंस इज डेबिटेड 400 200 200 सेल्स करेक्ट. सो अभी क्या होगा? सिंह एंड कंपनी
Debit 2 times 400 to suspense 400. Singh and Company to suspense. See the entry? Yes. IMP entry. This is also IMP. I को IMP लिखो. And whatever IMP entry you write down in your 100 pages book also. 100 pages के book में भी लिखना. Over. Yes. Easy था. 2 IMP questions. आठ नंबर एक ले लेता हूं मैं. 8 नंबर. 8 नंबर. Today's last question. 8 and 6 and 7 is your. We will cover it in next time, beta. Don't worry. Mr. Roy was unable to agree trial balance. Mr. Roy unable to agree trial balance. This is IMP question. And wrote the difference in P&L account of that year. So suspense में नहीं डाला, P&L में डाला. Next year, he appointed you as a chartered accountant. Next year, and you found following next year. Now see, next year में nominal accounts, write down over there, are already closed. All are already closed. Nominal accounts already close हो चुके. So nominal account होगा. Nominal account in rectification record as P&L adjustment account. ये very very important line. 100 pages में भी लिखो. 100 pages में भी लिखना. If बाद में लिख के देता हूं, कल लिख के देता हूं. So remember, next year nominal accounts are already closed ना, this year का. So nominal accounts in rectification entry recorded in P&L adjustment. किधर रिकॉर्ड करेंगे? P&L adjustment में. Okay. चलो. चलो. नॉमिनल अकाउंट्स के बदले में रेक्टिफिकेशन में P&L एडजस्टमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट. करेक्ट एंट्री, wrong entry, last question of the day, rectification. I have to see how many of you have patience till last minute. हमारे इधर तो पेशेंस ही नहीं है भाई, बच्चों के पुना वाले. चलो बहुत बढ़िया बेटा. लास्ट तक पेशेंस जिनमें भी है, यू आर गोइंग टू बिकम सीए. वेरी गुड. भूख प्यास साइड में रख के आप लोग सीए कर रहे हो. वेरी गुड. नंबर 1, परचेस ऑफ स्कूटर was debited to conveyance account. Purchase of scooter, तो scooter account debit to bank. But what happened? You have debited to conveyance. Conveyance is a nominal account. So conveyance account nominal to bank. Expense account बताया. बैंक correct. अभी स्कूटर इज अ रियल अकाउंट, तो स्कूटर को हम लोग डेबिट ही देंगे. इट्स अ रियल अकाउंट. बट कन्वेंस वी आर गोइंग टू कैंसल. बट कन्वेंस इज नॉमिनल अकाउंट, सो नॉमिनल अकाउंट इज
getting changed because it is already closed. So you will record to P&L adjustment account. So see the answer. Scooter account debit, motor vehicle account debit to P&L adjustment. So instead of nominal account, what you are going to write? You will write to conveyance के बदले में to P&L adjustment. It is very simple. If you are doing rectification in the next year, rectification next year में होगा तो nominal accounts are already closed. So आप लोगों को क्या करना है? नॉमिनल के बदले में P&L एडजस्टमेंट को खोलना है. नॉमिनल के बदले में P&L एडजस्टमेंट को खोलना है. समझे? बहुत सिंपल. Second one, purchase account was overcast. Overcast, opposite side. Opposite side. Opposite side है तो purchase को credit करेंगे, suspense को debit देंगे. So entry will be suspense account debit to purchase. But purchase is nominal account, is already closed. So suspense to P&L adjustment. Suspense to P&L adjustment. See the answer. Suspense to P&L adjustment. Okay. I will write now correct entries, wrong entry over there only on question itself. ठीक है, आप लोग नोटबुक में लिखो. A credit purchase of goods from Mr. P was entered as sales. Mr. P account debit, sorry, purchase. My mistake. So here, purchase account debit 2000 to P account 2000. IMP entry. इसमें गड़बड़ होएगा. You record it as sales. P to sales. 2000, 2000. Now purchase को डेबिट देंगे 2000, पर परचेस नहीं. परचेस के बदले में P&L एडजस्टमेंट. परचेस का 2000, सेल्स को कैंसल करना है 2000, सो 4000 टू पी चाहिए 2000 एक क्रेडिट एंड वंस अगेन डेबिट का कैंसल करना है. सो एंट्री विल बी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट 4000 4000. P&L टू P 4000 4000. अंडरस्टूड. सी वापस एक बार. परचेस टू पी, हमें परचेस को डेबिट चाहिए, सेल्स को भी डेबिट चाहिए कैंसल करने के लिए. पी को क्रेडिट चाहिए, कैंसल करने के लिए पी को क्रेडिट चाहिए. सो एंट्री विल बी इंस्टेड ऑफ P&L परचेसेस हम लोग किसको डेबिट देंगे? P&L एडजस्टमेंट. इजी? यस. नेक्स्ट इज IMP था. Receipt of cash from Mr. A was posted to Mr. B. Cash to Mr. A. Cash to Mr. B. Cash correct. So Mr. B को कैंसल करेंगे, Mr. A को करेक्टली रिकॉर्ड करेंगे. 1000 1000. Fourth one over. See the answer. B to A. Yes. पांच नंबर. कैश टू सी 500. कैश टू सी 500. But you have debited his account. So cash C 500 500 to suspense 1000. कैश करेक्ट. तो सस्पेंस टू सी 1000 1000. सी द आंसर. सस्पेंस टू सी 1000 1000. IMP. Fifth one is IMP. Cash to C. Cash 500, C 500 to suspense 1000. Suspense 1000 to C 1000. Over. 500 due by Mr. Q was omitted to write in trial balance. Due by Mr. ये भी IMP. Due by Mr. Q मतलब रिसीवेबल. रिसीवेबल है तो Q to suspense लिखेंगे. डेबिट बैलेंस. Q to suspense. Yes. Q to suspense. Trade receivable to suspense. Sale of goods to R omitted to be recorded. So R to sales. और sales nominal है. इधर no entry. So entry will be
R2 P&L adjustment. R2 P&L adjustment. See the answer. R2 P&L adjustment. Now, amount of 2395 was wrongly posted as 2593. See the answer. Purchases to R 2395. Purchases 2593 to R correctly recorded 2395 to suspense 198. Now we have to record. Suspense को cancel करेंगे, purchase को credit करेंगे, but purchases is nominal, so to P&L adjustment 198. See the entry. Suspense to P&L adjustment 198. Depreciation rate. Now depreciation rate स्कूटर के लिए इंपॉर्टेंट है. स्कूटर के लिए डेप्रिसिएशन रेट इंपॉर्टेंट है 300. So what is the entry? Last entry. Depreciation to scooter 300, but we will record no entry. So final entry will be P&L adjustment to scooter 300. अभी ICI ने क्या किया देखो. P&L adjustment to scooter, and your first entry was scooter to P&L adjustment 3000. So ICI ने directly scooter to P&L adjustment net effect 2700 लिया. So why 2700? You understood it now. Why 2700? Because दो एंट्री होगा. मोटर का यहां पे देखो दो एंट्रीज, स्कूटर टू P&L adjustment and depreciation का P&L adjustment to scooter. So instead of passing 3000 and 300 separately, they merged these entries and they got motor vehicle to P&L adjustment 2700. एकदम इजी है. अभी क्या करना है देखो. अभी कैल्सी पे लो P&L adjustment. सी अभी P&L adjustment कैल्सी पे लेना. अच्छा, टेक ऑन कैल्सी. P&L adjustment 2700 से क्रेडिट किया. टेक ऑन कैल्सी 2700 लिया कैल्सी पे. यस. फिर वापस 10,000 से क्रेडिट किया तो प्लस किया. नेक्स्ट डेबिट दिया. डेबिट माइनस, सो माइनस 4000 ऑन कैल्सी. यू आर गेटिंग आंसर 8700. नेक्स्ट B2A कुछ नहीं है. सस्पेंस टू C नहीं है. ट्रेड रिसीवर टू सस्पेंस नहीं है. R2 P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट है. P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट मतलब अगेन एड प्लस 2000. 8th एंट्री में 198 प्लस 198. सो यू आर गेटिंग आंसर P&L एडजस्टमेंट में 10,898. कैल्सी पे वापस एक बार P&L एडजस्टमेंट कैल्सी पे लो 2700. क्रेडिट है तो ऐड करेंगे प्लस 10,000 जिधर कलर किया है, माइनस 4000 कलर वाला डेबिट है. वापस प्लस 2000 प्लस 198 10,898. सी प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करते? कैपिटल. सो IMP एंट्री ट्रांसफर एंट्री लिखो. नेक्स्ट एंट्री विल बी P&L एडजस्टमेंट को ये बैलेंस जीरो हो गया. क्रेडिट बैलेंस था ना 10,898. नाउ वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट. किधर ट्रांसफर किया? कैपिटल. हिडन एंट्री IMP एंट्री. एंड सेम लाइक सस्पेंस लीजिए. अभी सस्पेंस को डेबिट था, लीजिए सस्पेंस 10,000. टेक ऑन कैल्सी 10,000. थर्ड एंट्री में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है. प्लस 1000 डेबिट है तो प्लस 1000. क्रेडिट है माइनस 500. डेबिट है प्लस 198. सो यू आर गेटिंग बैलेंस 10,698. यस, डेबिट बैलेंस. सो अभी बैलेंस जीरो करेंगे एंड ये भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. सस्पेंस ट्रांसफर्ड, ये भी IMP एंट्री. सो P&L एडजस्टमेंट
एंड सस्पेंस लास्ट में ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। लास्ट में किधर ट्रांसफर करना है? सस्पेंस एंड P&L एडजस्टमेंट यू हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज। So here we have finished with this question. Revision we will take it in the next class. You go through this question. तो आपको ये question समझ में आया तो P&L adjustment आपको and suspense very easy. Watch my session once again. Today's session very important. You can watch it once again. आप यहाँ पे ये आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा BRS भी था और आज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे। 5 and 8, 6 and 7 वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप यू एंजॉयड BRS टॉपिक। BRS आपको इजी लगा होगा। BRS का बेसिक्स आज हुआ है। वी विल गेट 2 more days to finish with BRS. Thank you and goodbye.